चांसलर मीट, भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU पश्चिम क्षेत्र कुलपतियों की बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंच पर आमंत्रित करती हूँ सम्माननीय प्रोफेसर GD शर्मा जी, अध्यक्ष AIU, प्रोफेसर विनय कुमार पाठक, उपाध्यक्ष AIU, डॉक्टर श्रीमती पंकज मित्तल, सेक्रेटरी जनरल महासचिव AIU, श्री समीर सोमैया जी, चांसलर सोमैया विद्याविहार विश्वविद्यालय, प्रोफेसर VN राजशेखरन पिल्लई, वाइस चांसलर सोमैया विद्याविहार विश्वविद्यालय, आप सभी गणमान्य विद्वज्जन मंच पर पधारे, आप सभी को नम्र विनती है। पश्चिम क्षेत्र कुलपतियों की यह AIU की बैठक के मेजबान के रूप में सोमैया विद्याविहार विश्वविद्यालय अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। AIU तथा सोमैया विद्याविहार विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी का विनम्र तथा सहर्ष स्वागत। आप सभी से नम्र निवेदन है, राष्ट्रगान के लिए आप अपने स्थान पर कृपया खड़े रहें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद। प्रार्थना के मधुर स्वर वातावरण को पवित्र करते हैं। सोमैया विद्याविहार संकुल तथा सोमैया विद्याविहार विश्वविद्यालय की प्रार्थना, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। मैं फिर एक बार नम्र निवेदन करती हूँ कि ईश स्तवन में हम लीन हो जाते हैं प्रार्थना के लिए। आप सभी कृपया अपने स्थान पर खड़े रहें। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च प्रज्ञां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृधत्वस्य स्पृद्धनम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभ्ये
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॐ शान्ति दीपज्योति नमोस्तुते। तेजोमय दीप आशा और उम्मीदों को बरकरार रखता है। मैं विनती करती हूँ जीडी शर्मा जी, अध्यक्ष AIU, तथा मंच पर अधिष्ठित हमारे आदरणीय विद्वज्जन, कृपया आप अपने शुभ हस्तों से दीप प्रज्वलित करें। सभी मंच पर विराजमान विद्वज्जनों से नम्र निवेदन, आप अपने आसन कृपया ग्रहण करें। धन्यवाद। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ तथा भारतीय विश्वविद्यालय संघ अर्थात AIU की स्थापना सन 1925 में हुई। उच्च शिक्षा, खेल तथा संस्कृति इन क्षेत्रों में नीति सलाह संस्थान के रूप में AIU दिशादर्शक है। AIU की पश्चिम क्षेत्र के कुलपतियों की बैठक का विषय है कार्य एवं कौशल विकास का भविष्य। इस 2 दिवसीय बैठक में देश के विविध विश्वविद्यालयों के कुलपति व्यक्तिगत रूप में तथा ऑनलाइन सम्मिलित है। उन सभी का सहर्ष स्वागत। मेजबान के रूप में सोमैया विद्याविहार विश्वविद्यालय। राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए शिक्षा क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने वाले पद्म भूषण श्री करमसिभाई जेठाभाई सोमैया जी ने सन 1942 में सोमैया विद्याविहार की स्थापना की। आज सोमैया विद्याविहार और सायंस स्थित सोमैया आयुर्विहार, इन दोनों संकुलों में विकसित करीब 34 संस्थाएं, 39,000 से ज़्यादा विद्यार्थी, करीब 1,500 शिक्षक प्राध्यापक, यह विस्तार निश्चित ही प्रशंसनीय है। 2019 में मुंबई स्थित पहले स्वयं अर्थ सहायित निजी विश्वविद्यालय के रूप में सोमैया विद्याविहार विश्वविद्यालय साकार हुआ। अब आपके समक्ष स्वागत पर तथा प्रास्ताविकी भाषण के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ
प्रोफेसर वीएन राजशेखरन पिल्लई जी को, उससे पहले उनका संक्षिप्त परिचय आपके समक्ष रखती हूँ। प्रोफेसर पिल्लई सर सोमैया विद्याविहार विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्यरत है। उन्होंने यूजीसी के अध्यक्ष तथा नैक के निदेशक के रूप में कार्य किया है। कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के वे कुलपति रहे हैं। देश के रसायन शास्त्र संशोधकों में उनका नाम अग्रणी है। आर वर्मा फाउंडेशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार, भारतीय विज्ञान कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति स्वर्ण पदक आदि पुरस्कार उन्हें प्राप्त हो चुके हैं। मैं प्रोफेसर वीएन पिल्लई सर को नम्र विनती करती हूँ कि आप अपनी प्रास्ताविकी सबके समक्ष रखें। Good morning, everybody. Dear President of Association of Indian Universities, AIU, Professor G.D. Sharma, our Honorable Chancellor of Somaiya Vidyavihar University, Sri Somaiya, Professor Pathak, Vice President of the AIU, Dr. Pankaj Mittal, Secretary General of AIU, distinguished Vice Chancellors of the universities, directors of the various national institutes, university-level institutions, and other dignitaries from the 4 states of India, western states of India, Maharashtra, Gujarat, Rajasthan, and Goa, representatives from the printed and electronic media, other distinguished invitees, ladies and gentlemen. First of all, let me, on behalf of the Somaiya Vidyavihar University, welcome all my distinguished Vice Chancellor and Director colleagues from the various institutions to this campus. Let me also welcome the officers of the Association of Indian Universities, which is organizing this event for the Western region. As mentioned in the earlier, Association of Indian Universities responsibility. It is a 98-year-old institution, Government of India, 98-year-old institution. They have been just looking at creating advocacy for teaching, research, and the universities in the country for the last 98 years. In 2 years, it's going to celebrate the centenary year, and we are extremely glad that we are hosting this event here. Somaiya Vidyavihar University is one of the 34 institutions of the Somaiya Vidyavihar. Our motto is liberation through knowledge. That is the motto of the Somaiya Vidyavihar. We have 2 campuses in the heart of Mumbai. Vidyavihar campus, the campus here we are sitting, and Ayurvihar campus, meaning very well that we are looking at education and health. Education and health. If we focus on these 2 areas, the rest of the things will come automatically. Empowerment will come automatically. That is the motto of this institution. 1942, of course, it was mentioned by my colleague earlier. 1942 we started. We celebrated the 82nd foundation day of this institution a few days ago. Professor M.M. Sharma gave the foundation day address. And since 1959, we have been in the university system with the first college, College of Arts, Science and Commerce, established under the Mumbai University. All our institutions are top accredited institutions. Engineering, management, humanities, social sciences, language, literature, Vedic studies, then philosophy, all walks of human endeavor is taken care of in education, teaching, research, and capacity building. Our university system is also supported by a very robust industry from our own side
looking at the agricultural industries, biorefinery industries, and chemical industries. Mr. Somaiya is the CMD of all these institutions. All our institutions, all our colleges and universities are also supported by these industries, in addition to a good number of industries outside the system. We provide quality education. We are, of course, we have been a teaching institution mainly, but now we concentrate on teaching and research in a very significant way. We have instituted large number of scholarships for undergraduate, postgraduate students, and also for research scholarships in large numbers, full-time research scholarship in large numbers. We are striving to become a center for excellence in teaching and research in the country, and we have also a lot of connections internationally. We have a large number of tie-up with good universities across the world, and we look at faculty exchange, we look at student exchange, we look at international training in all areas. In addition to all these things, we are engaged in cultural activities and also interfaith dialogue. That is one of the major institutions. There is a unique faculty in this university, Faculty of Dharma Studies. Probably with that name, only one university in the country, Faculty of Dharma Studies, looking after the Jains, Bharatiya Sanskriti, Jain Studies, and Buddhist Studies. We have a chair established, by Dalai Lama chair established in this university recently, and we conduct large number of such interfaith programs, intercultural programs, and we believe in Indian tradition. At the same time, we also believe in modernity. We welcome all modern trends in education with quality concerns. I thought of just introducing this university. You are welcome to the university and experience the ambience of this institution. Let me welcome all the dignitaries on the dais, and also all my colleague vice chancellors of the AIU member universities for this event. We will have in these 4 sessions, we are just looking at the theme, the future work and work empowerment and skill development. And we probably try to advocate the idea of the changing dimensions of the university, how the workplace is dynamically changing, and how the universities have to respond. Today also, the University Grants Commission come out with another circular saying that how micro-credentials and how short-term courses can be introduced in the university system. Lot of openings are happening in the higher education system, unlike earlier times, and therefore it is the responsibilities of the universities to change. And it is the vice chancellors, the leaders of the university, who has to trigger this change in the university system in the country. I am very confident that the type of deliberations which we are going to have during the next 1.5 days will definitely highlight some of these things. And also we will get an opportunity to interact, to exchange our own notes in collaboration. We talk about international collaboration, but it is very important that we have to collaborate. We have to find out the strength of each of our institutions and how we can, the universities in this region can collaborate. When it comes to work and skill development, the western region, where Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, Goa, these states are there, lot of possibilities of international industry collaborations. Industries are coming to universities now to provide opportunities for joint taught programs, industry exchange, professor of practice, and all that. A lot of things are there, and it is for us to grab some of these things and do something very constructively and positively looking at the future generation. Thank you very much, and welcome to the university. धन्यवाद सर। शिक्षा के क्षेत्र में जो एक नई क्रांति और क्रांति की लहर उठी है, उसका संदर्भ देकर सर आपने विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारियों को सूचित किया है। धन्यवाद आपके स्वागत पर भाषण तथा प्रास्ताविकी के लिए। आप सभी जानते हैं कि आज के इस उद्घाटन सत्र में विशेष अतिथि के रूप में महाराष्ट्र राज्य के सम्माननीय राज्यपाल
श्री रमेश बैस जी उपस्थित रहने वाले थे, लेकिन प्रकृति अस्वास्थ्य के कारण की वजह से आज वे यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं। उनका सम्मानपूर्वक उल्लेख करना हमारा कर्तव्य है तथा मंच पर अधिष्ठित सभी गणमान्य विद्वज्जनों का सम्मान, यह भी हमारा परम कर्तव्य है। आइए सम्मानित करते हैं हमारे मंच पर अधिष्ठित मान्यवरों को। AIU के अध्यक्ष प्रोफेसर GD शर्मा जी का स्वागत तथा उनका सम्मान करने के लिए मैं विनती करती हूँ श्री समीर सोमैया जी को। यह जो शाल है उसकी एक विशेषता यह है कि कच्छ स्थित सोमैया कला विद्या के कुशल कारागिर जिन्होंने ये शाल बुनी है और इसे प्रदान करते हुए सचमुच बहुत खुशी हो रही है। सबीर सर के प्रति तथा प्रोफेसर GD शर्मा जी के प्रति धन्यवाद प्रकट करती हूँ। AIU के उपाध्यक्ष प्रोफेसर विनय कुमार जी पाठक का सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ सोमैया विद्याविहार विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार, क्षमा करें, सोमैया विद्याविहार विश्वविद्यालय के कुलपति श्री प्रोफेसर राजशेखरन पिल्लई सर। मैं पिल्लई सर से नम्र विनती करती हूँ कि कृपया आप AIU के उपाध्यक्ष प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी का सम्मान करें। शाल तथा सम्मान चिन्ह प्रदान करते हुए श्री पिल्लई सर और सम्मान का स्वीकार करते हुए AIU के उपाध्यक्ष सम्मान्य प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी। AIU की महासचिव सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर श्रीमती पंकज मित्तल जी का स्वागत तथा सम्मान करने के लिए अब मैं आमंत्रित करती हूँ सोमैया विद्याविहार विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर नंद कुमार गिलके जी। शाल तथा सम्मान चिन्ह देकर सम्मान्य डॉक्टर श्रीमती पंकज मित्तल जी के प्रति हम स्नेह प्रकट करते हैं। और अब AIU द्वारा सम्मान सोमैया विद्याविहार विश्वविद्यालय के चांसलर श्री समीर सोमैया जी को सम्मानित करेंगे AIU के उपाध्यक्ष प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी। स्नेह का आदान प्रदान हो रहा है, बहुत ही प्यारा क्षण है। धन्यवाद। सोमैया विद्याविहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर VN राजशेखरन पिल्लई जी का सम्मान करेंगे AIU की महासचिव सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर श्रीमती पंकज मित्तल। धन्यवाद। आज के इस उद्घाटन सत्र को आगे बढ़ाते हुए मंच पर उपस्थित है भारतीय विश्वविद्यालय संघ की महासचिव सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर श्रीमती पंकज मित्तल
उनका संक्षिप्त परिचय आपके सामने रखते हुए, एक प्रख्यात महिला अकादमिक प्रशासक के रूप में डॉक्टर श्रीमती मित्तल देश भर में जानी जाती है। 3 दशकों से अधिक समय तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की सेवा, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय सोनीपत की संस्थापक कुलपति, कर्नाटक राज्य महिला विश्वविद्यालय की डीलिट पदवी प्राप्त आदि आपकी उपलब्धियां उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आपका कार्य अधोरेखित करती है। शिक्षा के लिए फुलब्राइट नेहरू छात्रवृत्ति, पद्मश्री सुभाषिनी देवी पुरस्कार की प्रथम विजेता, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार आदि पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुए हैं। मैं श्रीमती पंकज मित्तल जी से नम्र निवेदन करती हूँ कि अपने भाषण द्वारा कृपया हम सब से संवाद करें। थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले बधाई देना चाहती हूँ इनकी मीठी आवाज़, ये बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के साथ ये कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं। थैंक यू वेरी मच। The Honorable President of AIU and the Vice Chancellor of USTM University, Professor G.D. Sharma ji, the Honorable Vice President of AIU and the Vice Chancellor of Chhatrapati Shahuji Maharaj Kanpur University, Professor Vinay Kumar Pathak ji, Honorable Chancellor of Somaiya Vidyavihar University, Shri Somaiya ji, who is also a unique combination of an industrialist and an academician. Respected Vice Chancellor of Somaiya Vidyavihar University, Professor V.N. Rajshekharan Pillai ji, with whom I had the opportunity to work at the UGC when we both were working at UGC. Esteemed Vice Chancellors from various universities who have traveled from far-off places to this conference today. Distinguished chairpersons and speakers of the technical sessions and representatives of apex bodies, faculty members, media persons who are here, some of the students who are there, the organizers of the conference, both from the AIU side and the university side, the participants who are joined online in this particular program, ladies and gentlemen. A very, very warm welcome to the AIU West Zone Vice Chancellors Conference on the theme Future of Work and Skill Development. We are thankful to all of you because coming in such large numbers for a conference is really, this is something very good for us, which we really appreciate. And above all, thanks to Somaiya Vidyavihar University for organizing this conference and organizing it very, very well, very, very meticulously. So they have been working very hard to the extent that the registrar of the university traveled to some of the conferences of AIU which were held earlier just to know that how well to organize it, and that there should not be any glitch and there should not be any shortcoming in this conference. So thank you very much for such a meticulous arrangement. The theme of the conference is Future of Work and Skill Development. This emanates from the overall theme which we have kept for this year for the Vice Chancellors Conference, which is Higher Education at 2047. We all know that we are passing through the Amrit Kal. We have 24 years left for the 2047. So during the Amrit Kal, what should be the trajectory which the higher education system should be taking? So therefore, we are keeping the theme as Higher Education in 2047, and the sub-themes are 5 sub-themes are there based on which we are holding the conference. I'll be telling about the sub-themes in a little while, but before that I thought I'll tell something about AIU to all of you, because some of you may be the new members of AIU who do not know about AIU. So AIU is the largest university association of the world. So even the associations which are of multi-country associations like Association of Commonwealth Universities, the representative is here, the International Association of Universities, even they do not have as many members as AIU has. So right now we have 986 universities as our members, and it includes all types of universities, central, state, deemed, private, institutions of national importance, means IITs, NITs and all. And we have also 16 associate members who are the foreign universities who are the members of AIU. And AIU is the second oldest university association. Oldest is ACU. Second oldest is AIU, which was established in 1925. So in 98 years we have completed. So in 2 years' time we will be celebrating our centenary. So we will be starting the centenary celebrations in March 2024 when we have the annual conference this year.
and it will be ending on March 2025. So this is the legacy of AIU, and also you can know the legacy by the luminaries who have been the presidents of AIU in the past. This includes Dr. Radhakrishnan, who subsequently became the President of India. It includes Dr. Zakir Hussain, who subsequently became the Vice President of India. It also includes Dr. Shyama Prasad Mukherjee, who was a great academician. So these are the luminaries who have been the presidents of AIU, and AIU has been doing many things in the field of sports. We are holding sports competition at the zonal, national and international level, youth affairs. We do the equivalence of foreign degrees with the Indian degrees. We do a Anveshan, which is a student research convention. All this we'll be telling in the business session, but some of the highlights which we have been lately doing that I want to share with you. Right now we are taking internationalization of higher education as one of our primary goals, because the national education policy, it seems this time, the national education policy is the one which has given a lot of impetus to internationalization of higher education. And keeping that goal in mind, AIU is doing a lot in the field of internationalization of higher education. We have established a network called INHI, Indian Network of International Higher Education. And through that network, we want to help the universities to promote internationalization on their campuses, especially the Tier 2 and Tier 3 universities. Many of the vice chancellors, they do confess that they want to do internationalization, but they don't know how to do it, whom to approach, which university to partner with, how to go about it. So we are there to help you in promoting internationalization. We are also now holding education fairs in many countries so that your university can represent itself in other countries, so that you can get the students from those universities. We have recently signed an MOU with Edify Online, in which you can get international teachers to teach in your universities on discounted rates. Means we are making a concept of group of the consortium of say 5 universities which are teaching the same course. So the cost is divided, it comes to only 20% for one university, but you do have an international expertise to teach in your university. Similarly, we are holding very many webinars for say how to find a partner, how to internationalize, how to even open an international students office at your university. So we are doing many things to promote internationalization of higher education. So any university which wants to seek any help in this direction, do approach us. We are for you, because we have also signed MOUs with parallel associations, like we have Association of Indian Universities. Similarly, we have UK Association of Universities called UKI. We have Australian Universities Association. We have Canadian University Association. So with all of them, we have MOUs to promote partnership between Indian and the foreign universities. Then we are this time digitizing and internationalizing Anveshan. So if your students are participating in Anveshan, which is a student research convention, there we are trying to see that our student, means Indian student, collaborates with a foreign student and submits a joint project. So at the earlier age, they know what is collaboration, what is co-learning, how can they work together with an international student and submit a joint project. So that is coming up. So maybe many of your students have already registered. If not, do register now. We have also opened AIU academic and administrative development centers in 15 universities. So these centers are basically to train the teachers on how to use the technology. We are all talking about AI, but should we be afraid of AI, or should we use AI as an ally, as an aid? So how to use AI for better teaching learning, for better research, for better governance. So all this will be, teachers will be trained in these centers for use of technology, use of AI, use of modern methods of teaching, how to do personalized learning, personalized teaching. So all this we are doing. We will tell in more detail in the AIU business session. And we do bring out many research publications. There are 3 books in the recent past. One is Reimagining Indian Universities. One is Implementing NEP 2020, a roadmap. And another is Indian Higher Education Heritage. So in the last 2 years, we have brought these 3 books. And there are many monographs, including education, eligible enrollment ratio and all. So coming to this conference, I was telling you that the overarching theme is higher education at 2047. So we have 5 sub-themes. The first sub-theme which was in the South Zone conference, which was held at Vishweshwaraya Technological University. It was on digital transformation in higher education. So how higher education
say teaching, learning or research or governance will be transformed due to digital intervention. So that was discussed. We have got a report of that conference. Second conference was held in East Zone, that was in Royal Global University in Guwahati. That was on integrating Bharatiya knowledge system with higher education, because we have a lot of say good knowledge in our scriptures, which can be used, not only the scriptures but also the practices which we are following till date, whether it is religious or festivals or whatever. So all that was discussed in the second conference. Today we are having the third conference, which is the West Zone conference at Somaiya Vidyavihar University, and the topic is future of work and skill development. So basically what we are discussing today is that the future of work is changing very, very fast. I mean, if we train a student today with particular skill, those skills really are not applicable because the future of work is changing very fast. It's a dynamic workspace. So how to sort of have sustainable careers, how to train a student in a manner that even if the workspace is changing, they still remain relevant and they are able to change along with the changing workspace. So that will be discussed in today's conference. After that, we'll be having two more conferences. One will be in Central Zone in January, which will be on nurturing research and innovation ecosystem. It will be held in Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, Bilaspur, which is a central university. And the last conference we'll be holding in Kathmandu. Kathmandu University is an associate member of AIU, and they have offered to host this conference. So this conference will be held at Kathmandu University, and the theme will be globalization and internationalization of higher education. But one addition to this conference is that along with the conference, we are having a Indo-Nepal Education Summit. So in Indo-Nepal Education Summit, it will be a platform in which you can showcase your university through putting up, say, stalls in the campus. So we are making arrangements for all the universities of India, whosoever wants to participate, to put up their stalls and showcase that what they are good at, what are their activities, what are their programs, what are their facilities. So if you want to participate in that conference, I mean, you can be attending the sessions also. But in addition to that, you have the opportunity to put up the stalls. Very soon we'll be writing a letter to all of you that if you want to put up a stall in Kathmandu, and bear in mind that around 49,000 students who come to India from foreign countries for studying in India, 25% belong to Nepal. So if we project ourselves in Nepal, we can think of having many Nepali students in our campuses also. So that is why it is having a lot of importance. So these are some of the activities which we will be doing, and we'll be having 3 technical sessions today. One will be on sustainable careers, navigating a dynamic work landscape that I just mentioned, that how can we have sustainable careers. Second will be on human-centered skills in a tech-driven world, soft skills and emotional intelligence. Because it's not only technology alone, you have to have emotional intelligence, you have to have good soft skills, you have to have good communication skills. So what a discussion on all that will be there. And there is a special session on implementation of NEP, that how, I mean, rather the status of implementation of NEP in various states. So some of the states will be presenting to you that how they have implemented NEP in their respective state, with a special reference to future of work and education. So I hope that there will be positive deliberations, and it will pave way for us to have a consolidated report on higher education at 2047 and submit it to the Government of India, and it will form a base for many, many policy documents in the country. Thank you very much. Looking forward to a very, very positive deliberation. Thank you very much. डॉक्टर श्रीमती पंकज मित्तल जी के प्रति सस्नेह धन्यवाद प्रकट करती हूँ। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में AIU का कार्य कितना व्यापक है, इसके विविध पहलू उन्होंने हम सब के समक्ष रखे, तथा समय बड़ी ही तीव्रता से करवट बदल रहा है और इस बदलते समय में छात्रों को कौशल विकास के द्वारा किस प्रकार से विश्वविद्यालय तैयार कर सकते हैं, इसकी दिशा इस 2 दिवसीय बैठक में चर्चा के रूप में सामने आएगी। यह भी सूचना उनके भाषण में हमने पाई है। धन्यवाद मैडम। अगले
भाषण के लिए या मनोगत के लिए श्री समीर सोमैया जी को मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ, लेकिन पहले उनका संक्षिप्त परिचय। श्री समीर सर सोमैया विद्याविहार विश्वविद्यालय के चांसलर हैं, गोदावरी बायो रिफाइनरीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, केजे सोमैया ट्रस्ट, केजे सोमैया मेडिकल ट्रस्ट, केजे सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड एग्रीकल्चर रिसर्च और गिरी वनवासी प्रगति मंडल के अध्यक्ष। ऐसी विभिन्न जिम्मेदारियां वे बखूबी निभा रहे हैं। सर इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के विद्यमान अध्यक्ष के रूप में भी कार्यरत हैं। स्कूल ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी तथा सेंटर फॉर इंडिक स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स अमेरिका, काउंसिल ऑफ रिलीजियस लीडर्स कजाकिस्तान, इन संस्थाओं के सलाहकार मंडल से समीर सर का नाम जुड़ा हुआ है। द नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इटली पुरस्कार, आईआईसी द्वारा रासायनिक उद्योग में नेतृत्व के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार आदि पुरस्कार और गौरव उन्होंने प्राप्त किए हैं। सोमैया विश्वविद्यालय को, सोमैया विद्याविहार विश्वविद्यालय को अपनी दूरदर्शिता से दिशा देने वाले श्री समीर सर को मैं उनके विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आपके समक्ष श्री समीर सोमैया जी। जी डी शर्मा जी, विनय कुमार पाठक जी, पंकज मित्तल जी, हमारे ही पिल्लई जी और आप सब हमारे अतिथिगण, आपको हमारा नमस्कार और हमारा स्वागत है। आज हम एमर्जिंग ट्रेंड्स, रजिस्ट्रार ने मुझे अभी गवर्नर साहब का संदेश दिया है, तो मैं पहले इसको पढ़ लेता हूँ। Dear Shri Samir Somaiya ji, I was looking forward to attending the meeting of the Vice Chancellors of the Western region of the Association of Indian Universities being hosted by Somaiya Vidyavihar University on the 19th of December 2023. Unfortunately, due to some urgent and unforeseen work, I am required to regret my inability to attend and the inauguration ceremony. The meeting of Vice Chancellors is being hosted at the most appropriate juncture. The Honorable Prime Minister of India has sought the involvement of universities in transforming India into a Viksit Bharat by 2047. He has also appealed to all stakeholders to share their ideas with him. Needless to say, Vice Chancellors have an important role to play in realizing the goal of a Viksit Bharat. I wish and hope that the meeting will come up with concrete suggestions for reimagining of universities and for the effective implementation of the National Education Policy 2020 by the universities. I congratulate the AIU and Somaiya Vidyavihar for organizing the meeting and wish the participants fruitful deliberations. Warm regards, our Governor Ramesh Bes. So today's topic is emerging trends in the future of work. In our vision statement of Somaiya Vidyavihar, I have quoted Swami Vivekananda ji, that we want an education by which character is formed, strength of mind is increased, the intellect expanded, and where one can stand on one's own feet. And so this talking about the future of work refers to the standing on one's own feet. As the world changes, we continue to proceed. And important because one has to be strong economically for one's place in the world. संस्कृत में बड़ी अच्छा तरह से लिखा हुआ है कि शतहस्त समाहर
सहस्रहस्त संकीर, आप 100 हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से समाज को वापस करो. So it is important for us that we continue this work and we make our students capable ताकि वो कमा सकें और उस अपनी कमाई को समाज को, अगर 100 हाथों से कमाया है, हम अपने ही विद्या व्यवस्था से हज़ारों हाथ तैयार करते हैं और उन हज़ारों हाथों से अपनी समाज को ज़्यादा समृद्ध करते हैं और ज़्यादा आगे हम बढ़ सकते हैं. But it's often interesting as I think about today, हमने आपको स्वागत में यह शाल दिया है. यह शाल हमारे ही छात्रों ने बनाया हुआ है कच्छ में. कारीगर हैं, मास्टर क्राफ्ट्समैन एंड मास्टर क्राफ्ट्सवुमेन. So as we talk about AI, the future of work and how that work is changing, we must also keep in mind and remember that these are also things that make our life beautiful, and that this beauty we should continue to carry on with us. Today in the Mint, I was reading about 3D printing of food, that people are thinking about 3D printing of food. At the same time, we are experimenting in Karnataka on sustainable future using things like Panchagavya and Jivamrit to see, because if you have to create a more sustainable future, आप 3D printing of food तभी बना सकेंगे जब आपको कार्बन आपके पास उपलब्ध होगा. अगर कार्बन आपके पास उपलब्ध नहीं होगा तो उससे आप खाना चाहे कहाँ से भी उसकी उपज करें, आपको किसी तरह से वो तो बनाना तैयार करना ही पड़ेगा. So climate change is something that we have to do. I was reading a book by Arturo Escobar who talks about designing for the pluriverse. It is a pluriverse where many worlds fit. So you want to fit a world of AI, you want to fit a world of Karigari together with a deep concern for social justice and radical equality and non-hierarchy. I think as we create a world for the future, we must create a world where we focus on social justice. I'll end with another Sanskrit saying which I also like, because as we focus on कार्य कुशलता, हमें यह तो याद रखना है कि what we must teach is tat karma yanna bandhaya sa vidyaya vimuktaya ayasaya param karma vidya anya shilpa naipunam. So it's important जब हम सिखाते हैं सबको तो character, that is where Vivekanand goes back to where he said character is formed. We must create character. The nation is built on nation builders, and our job as educators has to be one to create great nation, citizens of India and citizens of the world. So thank you very much for coming here. I'm deeply indebted to AIU for choosing us as a location, and we welcome you all. Thank you very much. स्वामी विवेकानंद जी के विचारों का संदर्भ श्री समीर सर जी के इस भाषण रूपी संवाद में हमने पाया. समाज ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी युवा पीढ़ी निभाने जा रही है और उनके चरित्र निर्माण की जिम्मेदारी विश्वविद्यालयों की हमारी है. इस सूत्र को उन्होंने अपने भाषण में हमारे सामने रखा. सर, बहुत बहुत धन्यवाद. आपके समक्ष अब आमंत्रित करने जा रही हूँ प्रोफेसर सम्मानीय विनय कुमार पाठक जी को. उसके पूर्व उनका संक्षिप्त परिचय आप सबके सामने रखती हूँ. डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी AIU के उपाध्यक्ष हैं तथा कुलपति हैं छत्रपति शाहू महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के. ख्याति प्राप्त शिक्षाविद के रूप में वे जाने जाते हैं. उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, वर्धमान महावीर कोटा मुक्त विश्वविद्यालय राजस्थान,
एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी टेक्निकल विश्वविद्यालय। इन विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है तथा महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों के लिए कुलपति पद का अतिरिक्त प्रभार भी उन्होंने संभाला है। सर प्रख्यात प्राध्यापक है कंप्यूटर संगणक साइंस संगणक विज्ञान के क्षेत्र में। मीडिया लैब एशिया के लिए वे कार्यरत रहे हैं और इन्फोस्कल्पचर जानकारी मूर्तिकला के विषय में उन्होंने कार्य किया है। वैदिक गणित को लोकप्रिय करने में डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी का योगदान बहुत बड़ा है। मैं उन्हें अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। सम्माननीय श्री डॉक्टर प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी। धन्यवाद। मेरा आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष श्री जी शर्मा जी, इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री समीर सोमैया जी, विश्वविद्यालय के कुलगुरु श्री पिल्लई जी, हमारी ओजस्वी और काम करने में निपुण सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर पंकज मित्तल जी, और इस सभागार में उपस्थित वेस्टर्न जोन के विश्वविद्यालयों के कुलगुरु और हमारे अपने मित्र। पहले तो मैं समीर सोमैया जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, इस बात के लिए नहीं कि उन्होंने हम लोगों का आतिथ्य इतना सुंदर किया, बल्कि इस बात के लिए कि उन्होंने जिस विश्वविद्यालय की नींव रखी, उस विश्वविद्यालय में शिक्षा के साथ धर्म को जोड़ा और शिक्षा के साथ संस्कार को जोड़ा और शिक्षा के साथ सचमुच भारतीय मनीषा में संस्कार जोड़ने की बात रही है। आज आप सभी लोगों को ये याद दिलाता चलूं कि इस देश के प्रख्यात गणितज्ञ रामानुजम श्रीनिवास रामानुजम का भी बर्थडे है 22 तारीख को, और उन्होंने 3900 इक्वेशंस इस पूरे विश्व को दिए। और रामानुजम ने अपने एक शब्द में एक बार कहा भी कि इफ़ माई इक्वेशंस डजेंट मैनिफेस्ट गॉडेस, क्योंकि वो अपने कुल देवी के बहुत बड़े उपासक थे। उन्होंने कहा इफ़ माई इक्वेशंस डज नॉट मैनिफेस्ट गॉड इट इज़ यूजलेस। और ऐसा लोग कहते हैं, हार्डी और उस समय के लोग, कि उन्होंने जितनी भी इक्वेशंस दी हैं वो मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड से दी हैं, क्योंकि उसका प्रूफ और बाकी चीज़ें उन्होंने बहुत बाद में लोगों ने उसको रिसर्च करके निकाला है। मैं इस बात के लिए भी समीर जी को कहना चाहता हूँ, जो बहुत अच्छी आपने प्रार्थना करी और उसकी स्टार्टिंग करी ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्, तो मुझे वो बात याद आई कि इस पूरे श्लोक का, क्योंकि भारतीय मनीषा में श्लोकों का अर्थ बहुतायत बहुत तरीके से होता है, और यह श्लोक गणित के उस श्लोक से बहुत निकट है, क्योंकि जो लोग गणित के विद्यार्थी रहे हैं कि अगर पूर्ण में से पूर्ण निकल जाता है तो भी पूर्ण रहता है, और पूर्ण में से पूर्ण मिलता है तो भी पूर्ण रहता है। तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होता है। ऐसा हम लोगों ने बहुत सारे मैनिफेस्टेशन में देखा है। आज का जो सेमिनार का हम लोगों का संवाद है, बहुत सारे सेशंस में लोग आएंगे। एक इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रप्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज, और हम लोग जो इस समय उपलब्ध हैं, इस समय इसको देख रहे हैं, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के हम लोग उसमें हैं, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कस्प पे हैं, और जो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं लगभग उन्होंने पूरे विश्व को चेंज किया है। जैसे कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसने बहुत ज़्यादा रूल किया आईसी इंजन्स ने। अब हम लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स देख रहे हैं, और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को टेस्ला तो उसको व्हीकल कहने पे ही नहीं रेडी है। वो बोलते हैं कि हमारा जो व्हीकल है वो ऑटोमोबाइल नहीं है, वो एक डिवाइस है, एंड दैट डिवाइस इज रन बाय द सॉफ्टवेयर्स एंड द डेटा एंड एआई। तो इस तरीके की जो इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जैसे म्यूज़िक टेक्नोलॉजी का डिसरप्शन, हेल्थ साइंसेस का डिसरप्शन, जहाँ पे हम टारगेटेड मेडिसिन्स बनाने के लिए तैयार हैं,
तो पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मैं डिटेल सर्वे देख रहा था, उस सर्वे ने बोला है कि 2025 तक 87 मिलियन जॉब समाप्त हो जाएंगी जो ट्रेडिशनल जॉब्स हैं, और 95 मिलियन नई जॉब क्रिएट होंगी, और 95 मिलियन नई जॉब्स में 33% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की जॉब्स होंगी, 32% डेटा साइंटिस्ट और डेटा ड्रिवन जॉब्स होंगी, और 31% के आसपास डेटा एंट्री के क्लर्क्स की जॉब होगी। तो मुझे लगता है कि जो इस समय हमें स्किल्स की इंपॉर्टेंट है, और जैसा कि इलॉन मस्क ने कहा कि आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट डिग्रीज, आई एम ओनली बॉदर्ड अबाउट इफ पर्सन हैज गॉट ए स्किल और नॉट। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है कि पिछले दशक में, 2-3 दशकों में, अगर आप मेरे पास डिग्री है बीटेक कंप्यूटर साइंस की या बीटेक मैकेनिकल की या पीएचडी है तो मुझे जॉब मिलती है। ये जो नई जनरेशन है या नया इम्पॉर्टेंस है, और उस इम्पॉर्टेंस के 2 रीजंस बहुत जल्दी हुए हैं। एक तो इंटरनेट का विकास, और दूसरा कंप्यूटिंग पावर में इंक्रीजमेंट। जो हमारा कंप्यूटिंग पावर नया है, जिसमें हम GPUs और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स मूरेस प्रिंसिपल से जो इतने फोल्ड्स इंक्रीज हुआ है, तो मुझे लगता है कि इंडिया के पास भी एक इम्पॉर्टेंट समय है, लेकिन इंडियन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे कि जो भी इंडियन स्किल्स यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट्स दे रहे हैं, उनको फिर से रीस्किलिंग की ज़रूरत है, अपस्किलिंग की ज़रूरत है, इस तरीके की बातें रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस डिकेड में, जो नेक्स्ट डिकेड है, अगर हम लोगों ने स्किल्स को ठीक से सीखा, क्योंकि पिछला दशक उन लोगों के पास था जिनके पास हाई इंफ्रास्ट्रक्चर थे, उनके पास रोड्स इम्पॉर्टेंट थी, उनके पास बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर थे, लेकिन नई सदी उन लोगों के हाथ में है जिनके पास डेटा है। अगर डेटा है तो वो व्यक्ति के पास, जिसके पास डेटा होगा, डेटा एनालिसिस होगी, डेटा ड्रिवन होगा, और खासकर अपनी कंट्री के पास बहुत सारी फील्ड्स में, जस्ट लाइक मेडिकल, तो मेडिकल का अगर किसी को भी AI टूल डेवलप करना है तो उसको इंडिया को देखना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के पास डेटा है। ऐसे ही बहुत सारी स्किल प्लेसेज हैं जहाँ पे डेटा ड्रिवन चीज़ें हैं, और डेटा विल रूल। जिसके पास डेटा होगा वो इम्पॉर्टेंट होगा। तो मुझे लगता है कि यह वर्कशॉप बहुत समसामयिक है, मैडम ने और हम सब लोगों ने सोच के किया है, और इसमें आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा। और हम लोग सारे इंस्टीट्यूट मिलकर नए स्किल का फ्रेमवर्क, नए स्किल के कोर्सेज लाएंगे, जिससे कि इंडियन इकोनॉमी भी बूस्ट कर रही है। वैसे भी आई थिंक इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, दिस विल बी द 3 लीडिंग इकोनॉमीज इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। ऐसा मेरी ही समझ है, पता नहीं वो मतलब सही है या नहीं है, लेकिन मैंने जितना पढ़ा है, तो मुझे लगता है कि स्किल पे हम लोगों का काम होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, हर इंस्टीट्यूट्स का होना चाहिए। और मुझे लगता है कि स्किल के साथ संस्कार और शिक्षा दोनों का इम्पोर्टेंस होना चाहिए। आप सभी लोगों को यहाँ पे आने का ये बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो ये 2 दिन के डेलिब्रेशंस होंगे, इसमें ज़रूर कुछ नवनीत निकलेगा, कुछ मक्खन निकलेगा, जिसे हम सब लेकर जाएंगे और हम आगे काम करेंगे देश के लिए, विश्व के लिए और सृष्टि के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। प्रोफेसर विनय कुमार पाठक जी ने हमारे सोमैया संकुल की प्रार्थना को गणित से जोड़कर बहुत ही सुंदर आशय हम सबके सामने रखा, तथा भारतीय शिक्षा की गुणवत्ता की चर्चा चारों ओर हो रही है, लेकिन भारतीय शिक्षा की गुणवत्ता उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो संस्कार और संस्कृति से जुड़ी है। यह संदर्भ उनके भाषण संवाद से हमारे सामने उजागर हुआ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत खुशी है कि हमारे बीच उपस्थित है AIU के अध्यक्ष तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेघालय के कुलपति प्रोफेसर GD शर्मा जी। नागालैंड, असम तथा विलासपुर विश्वविद्यालय के कुलपति तथा अन्य महत्वपूर्ण पदों पर सर कार्यरत रहे हैं।
रॉयल सोसाइटी लंदन यूके तथा अन्य से भारत के बीच आदान प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत रॉयल सोसाइटी लंदन के फेलो होने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है। इंडियन पाइथोपैथॉल द्वारा डॉक्टर नरसिंहन मेडल पुरस्कार, इंटरनेशनल स्टडीज सेंटर द्वारा राष्ट्रीय रत्न पुरस्कार, इंडियन बोटानिकल सोसाइटी द्वारा बिरबल साहनी पुरस्कार, ऑल इंडिया हायर रिसर्च संस्कृत रायबरेली द्वारा विद्या रत्न राष्ट्रीय सम्मान आदि गौरव उन्हें प्राप्त हुए हैं। आपके समक्ष विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर GD शर्मा जी, अध्यक्ष AIU। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को मेरी तरफ से प्रणाम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इस सभागार में सभी उपस्थित हमारे आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर विनय पाठक जी, उपाध्यक्ष AIU एवं कुलपति छत्रपति साहू महाराज जी विश्वविद्यालय कानपुर, श्री समीर जी, मैं जस्ट आपके साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सोमैया जी, डाउन टू अर्थ, एकेडमिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट और इस विश्वविद्यालय के ऑनरेबल चांसलर, such a personality where we see that chemistry of man tells the nature of a person, so which we have seen. So we are grateful, sir, that you have allowed us to host, and you are such a great host. We carry some of your these chemical particles with us. Honorable Professor V.N. Rajsekharan Pillai ji, Honorable Vice Chancellor of Somaiya Vidyavihar विश्वविद्यालय और भारतवर्ष के गणमान्य विद्वानों में से एक, उनके द्वारा जो मार्गदर्शन है वो अतुल्य है। और इस AIU के एक नया जान जिसको कहते हैं, सोए हुए को जगाना, हमारे माननीय श्रीमती डॉक्टर पंकज मित्तल जी के द्वारा लगातार पिछले 5 वर्षों से AIU का नाम इंटरनेशनल फोरम पर ला कर के पहले हम कोशिश करते थे विदेश में, अभी विदेशी कोशिश कर रहे हैं कि AIU के माध्यम से कैसे हम एंटर करें भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में। और हमारे इस पश्चिम क्षेत्र से आए गणमान्य ऑनरेबल वाइस चांसलर्स फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, और ये कहते हैं कि सूर्य तो पूर्व में उगता है, छिपता पश्चिम में है, लेकिन इकोनॉमी जो है वो पश्चिम में उगती है और छिपती है पूर्व में। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर इकोनॉमिक ग्रोथ देखें, चाहे वो वर्ल्ड की हो या भारतवर्ष की हो, वो पश्चिम में लगता है कि ज़्यादा वो मैग्नेटिक पावर पश्चिम में है। और इसीलिए ईस्टर्न पार्ट जितने भी हैं, चाहे वो वर्ल्ड के हों, जापान वगैरह छोड़ करके, लेकिन ख़ास तौर से इंडिया को, कि वो थोड़े से कमज़ोर पड़ जाते हैं।
लेकिन बैलेंस दोनों में, जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि डेटा जो है वो पूर्व में है, क्योंकि फिजिकल चीज़ें पश्चिम में ज़रूर है, मशीन काम करेगी, लेकिन जो मशीन को एक मानवता है वो बहुत ज़रूरी है, जो कि वो नहीं आ पा रही है। इसीलिए ये मशीनों का यूज़, कहीं वार, कहीं कुछ, ये सब हो रहा है। शांति वाली नहीं मशीन बन रही है अभी, कि शांति कैसे हो मन को। तो भारतीय संस्कृति यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाती है कि ऐसी शिक्षा हो जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन हो, सस्टेनेबिलिटी। और यही कारण है कि बहुत सिविलाइजेशन हुई, लेकिन इन दिस होल वर्ल्ड ओनली इंडियन सिविलाइजेशन कुड सर्वाइव एंड ग्रोइंग बिकॉज ऑफ द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ द कल्चर, also dharma, I will not say religion, dharma and karma, and also to only find the truth through humanity. When we say like this, that means each and every individual and each and every community of the country has to be seen and also to be provided access, equity, quality, affordability to the education, so that everybody in our country can live with dignity and also feel confidence in him and her to contribute to the society. So ultimately, our aim of this theme of this is 2047. What should be the vision of the AIU to give to the universities? Since Madam said that Amrit Kal started, and now how we can contribute for Viksit Bharat by 2047. So we find that after so many years of transformation of education systems, policies, NEP 2020 for the first time has given some scope to the youths that, okay, up to 40% you have liberty to choose and see what you can contribute, what you can also learn, and the freedom of this flexibility of learning. Though I will say personally, it is a partial freedom. Maybe by 2040, we will have full freedom to the youth to learn as per their potential and contribute fully for both society, economic development, and humanity. This 40% also is taking time to provide, because our mindset is still not accepting this change. Being the Indian a traditional society, we take long time to change anything. A bed lying in my room, in my whole life, it will not get changed to the direction of that bed. शादी होती है 7 जन्म, 7 births. We are comparing with a world which always belong and believe in change. So how to fill up this gap and how to prepare youths also to adjust and also be part of this.
whether part of this or a new. That is how our Honorable Prime Minister wants, that it should be new. Then only we can say Vishwa Guru, give to other world. And this giving is possible only when we create a new way of transforming the education, not following the education from West. And that is why we have to have the continuous learning and always respecting the skill and becoming the part of changing of skill, and also create the basis of the Indian culture. The Indian culture is based on the cooperation and collaboration, not individualistic. Our country, basically a tropical country, where our all cultures have developed from nature, not from inside the house. This is the basic difference. Whereas in West, where these technologies are developing, they are developed from inside the room, not from nature. So they can never think of a component of nature, whereas we always feel we are part of the nature. So we never think of destroying nature, but the culture, Western, anything coming from this nature. We think for the society, as Somaiya sir said, earn with 100 hands, give to the society with thousands of hands. These are the teachings. Whereas the other side says, earn with 1,000 hands and give one with one hand. They also say give, but with one hand. So such a gap indicates that our system of giving this degree has to be brought under change. As Somaiya Sahab also quoted, Swami Vivekananda ji. Swami Vivekananda ji got 45% marks in BA in psychology. Only 45% marks in degree. If he wants to get admission in today, his merit will not allow him to get even admission to PG. But he is the most intellect personality, not only of this era and whole world globe. Because of this, he said, the hidden talent of a person has to come out. If we see within our country the examples who got Bharat Ratna, most of them, they are not PhD holders. Even from Assam, he was PhD, of course, in education, teaching, but Bharat Ratna was, or he did not become famous for this, his education teaching. Others, because of talent in other fields, was not allowed by our education system. So we feel now that talent has to be identified and given this enough scope to develop so that the personality, total contribution can come out. Such a vision is taken by AIU, that those universities which have multidisciplinary, more and more facilities can also provide the collaboration with other hand-holding. Also see that the students from other countries come to our country. That is why for the first time now AIU has decided
that AIU will take our education system first to neighboring countries, then to other countries, and along with not only the education what we are giving in degrees, but along with this, what we are giving for creating a sustainable society, a peaceful environment, and also coexistence between man and the nature. I am sure these 2 days our meet where we have experts from industries, from different universities will deliberate. They will also show us some path and also give us some food to carry out further this our vision and how this vision can be converted into mission so that our educational institutions, as our Honorable PM expect, on 11th of December he had gathering youths and the involvement of youth is required now, and I am sure that in this way some missionary road map will come out, and every year when we meet, those milestones can be measured. Giving me this opportunity, I take this opportunity to thank the Honorable Vice Chancellor and Chancellor of Somaiya Vidyavihar University, and I thank all the committee members of their university students for such a wonderful atmosphere created by the music, Indian music. We have never seen in any such meet that the music is respecting this one. So thank you very much. Namaskar. धन्यवाद सर। प्रोफेसर GD शर्मा जी, अध्यक्ष AIU, सर ने जो विचार आप सबके समक्ष, हम सबके समक्ष रखे, उनमें कई सूत्र रहे। पश्चिम के पास मशीनें हैं, लेकिन मशीनों से मानवता का जुड़ना बहुत ज़रूरी है, और यह ताकत भारतीय शिक्षा में है। उनके भाषण का यह प्रमुख सूत्र सचमुच बड़ा ही महत्वपूर्ण है। NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शिक्षा में संक्रमण तथा शिक्षा के जरिए शाश्वत विकास आदि अन्य महत्वपूर्ण सत्र उनके भाषण में रहे। सर, आपके प्रति धन्यवाद प्रकट करती हूँ। कार्यक्रम को और इस उद्घाटन सत्र को आगे बढ़ाते हुए AIU द्वारा पिछले 93 वर्षों से 93 इयर्स से भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था के प्रति समर्पित यूनिवर्सिटी न्यूज़ पत्रिका प्रकाशित की जाती है। उसके समृद्ध आशय के लिए उच्च शिक्षा जगत में यह पत्रिका प्रसिद्ध है। कार्य और कौशल विकास का भविष्य इस विषय पर विशेष अंक के साथ AIU हम सबके समक्ष है। इस अंक का संपादन किया है डॉक्टर एस रमादेवी पाणी जी ने, जो कि पिछले 23 सालों से इस अंक का संपादन कर रही हैं। मैं नम्रतापूर्वक डॉक्टर एस रमादेवी पाणी जी को इस विशेष अंक के विमोचन में सम्मिलित होने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ और मंच पर अधिष्ठित सभी विद्वज्जनों से नम्र निवेदन करती हूँ कि इस विशेष अंक का वे विमोचन करें। AIU द्वारा यूनिवर्सिटी न्यूज़
इस 2 दिवसीय बैठक के विषय पर आधारित विविध पहलुओं की चर्चा करने वाला विशेष अंक, जिसका विमोचन और इस विमोचन के पल के हम सभी दर्शक है, हमारे समक्ष ये बड़ा सुंदर सा पल है। मैं मंच पर अधिष्ठित सभी विद्वज्जनों के प्रति इस विमोचन के लिए आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। और अब इस उद्घाटन सत्र के आभार व्यक्त करने के लिए सोमैया विद्याविहार विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर नंद कुमार गिलके जी आपके सामने आ रहे हैं। मैं उन्हें स्नेहपूर्वक आमंत्रित करती हूँ। Good noon to all. It has been such an honor to be part of this such a wonderful event. It is my pleasure and privilege to stand before this august gathering to propose the vote of thanks for the AIU West Zone Vice Chancellors Meet 23-24. I wish to express my thanks to the Honorable President of AIU and Vice Chancellor, University of Science and Technology, Meghalaya, Professor G.D. Sharma, for giving this great opportunity to Somaiya Vidyavihar University for hosting this event. Thank you, sir. Sir, I would like to mention that Somaiya Vidyavihar University always aims to contribute to the overall development of the students by imparting education that takes into consideration the futuristic skills required. We have already taken steps to implement all the programs under the National Education Program. Sir, you have already witnessed our students, Mr. Kiran Shinde, who was performing Shehnai for welcoming all the esteemed Vice Chancellor and guests today. On behalf of the faculty and teachers, I assure you that we shall thrive to create holistic development for the students by imparting the necessary skills that will benefit them in the long term. Special thanks to Dr. Vinay Kumar Pathak, Vice President of AIU and Vice Chancellor, Chhatrapati Sahuji Maharaj University, Kanpur. The Honorable Secretary General of AIU, Dr. Mrs. Pankaj Mittal, has very well emphasized the importance of the future of work and skill development, which is the main theme of this conference. My sincere thanks, Madam, for support you have bestowed during the preparation of this conference. Thank you. And yes, our Honorable Chancellor, Somaiya Vidyavihar University, Shri Samir Somaiya ji, has always been source of inspiration as he leaves no stone unturned to fulfill the vision of his late grandfather, Padma Bhushan Shri Karamchibhai Jethabhai Somayas, to provide holistic education to the needy. He aims to make this university one of the premium universities in the West Zone, and he always supports us as we move forward with confidence. Thank you very much, sir, for your constant support. Thank you. And our Honorable Vice Chancellor, Somaiya Vidyavihar University, Professor V.N. Rajashekharan Pillai, is a great support to the students and faculty members. His immense knowledge in the academics, enthusiasm, and encouragement to all in the university is remarkable. Thank you very much, sir, for your constant encouragement, mentoring, and guidance. I take this opportunity to express my heartfelt gratitude to all the Vice Chancellors, over 150, who are present here physically,
and those who are attending this program online, the deans, the head of the institutions of the Somaiya Vidyavihar University and Somaiya Vidyavihar, the nodal officer, and the anchors of this event. A big word of thanks to all the members of the AIU official team, my core committee members, faculty members, student volunteers who have helped us to move forward with confidence in this West Zone Vice Chancellors meet to this level. Thank you all for being there and working with us. Indeed, it is a great learning experience for all of us. I also extend our thanks to various media partners and sponsors. I wish to thank all our guests present here for taking time to be with us today and helping us to make this event a grand success. Thank you one and all. Thanks a lot. धन्यवाद प्रोफेसर गिलके जी। अब 15 मिनट के लिए टी ब्रेक, चाय पान के लिए मध्यंतर होगा और उसके उपरांत अगले सत्रों की शुरुआत होगी। धन्यवाद आप सभी के प्रति फिर एक बार सविनय धन्यवाद। Hello. We request all the Honorable Vice Chancellors and guests to kindly proceed for high tea at the back of the stage, backstage. There are 2 exit doors at the back of the auditorium. Kindly request you to join us for high tea.